What do you understand by Sapinda marriage? केशवानंद भारती का जजमेंट किस डेट को प्रोनाउंस हुआ? Does the Hindu Marriage Act anywhere talk about intra-gotra marriage? Can you marry inside your own gotra? May I come in, sir? Come in. Thank you, sir. Good afternoon. Have your seat, Sachin. Thank you, sir. Tell us something about you. My name is Sachin Vats, born to Chandmani Devi and Sunil Chaudhary. I belong to Sitamarhi district of Bihar. I started my early education from Ramakrishna Mission Vidyapeeth, Devghar, Jharkhand. Thereafter, in 2016, I cleared CLAT and joined Rajiv Gandhi National University of Law, Patiala, Punjab. After graduating in 2021, I joined the office of 𝐦𝐤𝐤𝐚𝐥 Ranjan Gogoi as a legal researcher. Thereafter, few months of practice, I attempted for Bihar Judiciary, and right now before you, this is my first attempt to 32nd Bihar. Do you think, Sachin, that Indian law is having prejudices in favor of patriarchy? Sir, it cannot be blatantly said that Indian law favors patriarchy, but as the law is the prism of the society, and what the society believes is somewhat is reflected in the law of the land. So there are few laws which favors patriarchy, but with the passage of time, these laws have been upgraded and amended as per the new ideas of liberty and If mother of a child comes from unreserved category, social class, and father comes from a reserved category, will the child get the benefit of reservation? So with regards to the first and primary thing is how he is being treated, but in the present scenario, as per the rule of law, what is the status of his father or her father? He will be granted reservation on the basis of that only. Prejudice in favor of patriarchy? Yes. Isn't it? Law recognizes a child to be legitimate progeny of father and not legitimate progeny of mother. Sir, we can. If a mother Yes, comes sir. from reserved category and father comes from unreserved category, the child would get reservation facility or not? Sir, with regards to this, what I can recall right now, there was a case of a famous IRS officer, Sameer Wankhede, of the case related to reservation in the UPSC. So his father was a Muslim, but his mother belonged to a community of SC, ST, I think. So he took reservation on the basis of that, because he said that his upbringing was done by his mother, and that's why. So in every single case, a person has to go to the court. Normally, it is done on the basis of the status of his or her father. But if there is any special scenario, it is seen that. Okay, what do you understand by Sapinda marriage? And is it prejudiced in favor of patrilineal lineage? Sapinda marriage is a form of restriction. One of the restriction in Hindu marriage law under section 5. It relates to the Sapinda relates to the patriarchal side, but I think it is done in order to maintain. Of course, some logics are there. Yes, sir. Logic for patriarchy is there, but the fact remains that law is prejudiced in favor of patriarchy. Yes, sir. So, isn't it violation of Article 14? So we cannot say that it violates Article 14 because there are some Equal protection of laws. Equal protection of patriarchy and matriarchy. We cannot say it because what our society is, and in order to maintain a coherence in the society, and what our customs are and what we believe in, it will be if we change it rapidly, it can create a. Let's say if the law makes explicit declaration that whether child's father is coming from reserved category or mother is coming from reserved category, the child would necessarily get the benefit of reservation. Sorry, sir. If the child, in case of reservation in Lok Sabha seat or reservation in Vidhan Sabha seat or reservation in administrative jobs or reservation in admission to education institution, in any kind of reservation,
if a child is given equal right, whether a child mother is from reserve category or child father is from reserve category, both the children are getting equal right. How it will impact the entire administration of this kind of reservation laws? It will impact reservation law, but socially, if we see, it will be very helpful in creating a gender equal society. But we have to come down or narrow down to a particular point that in order to decide the criteria for reservation, because there are many situations where it may happen that in order to take the benefit of reservation, one may take the benefit of mother and another may take the benefit of father. So there should be in present scenario, there is one side fits all approach. So I think it will take time to come to this. That's fine, but the question was that how it will impact the entire reservation structure, reservation facility. Will it become more beneficial for society, reservation facility, or become less beneficial? It will become more beneficial for the society. So why do you think legislature is not taking a more progressive view of this option? Because it may create confusions and regarding inclusions and exclusions in reservation. Okay, fine. सचिन, Yes, sir. आपको क्रिकेट भी खेलना आता है और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के Yes, sir. ग्रेटेस्ट प्लेयर भी रहे. उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. Sorry, sir, I cannot recall it right now. केशवानंद भारती का जजमेंट किस डेट को प्रोनाउंस हुआ? It was in the month of April कोई डेट था? 1972, 1972. 1973. Sorry, sir, I cannot recall the exact. 24 अप्रैल 1972. 3 यही उनका बर्थडे भी था और इसी दिन केशवानंद भारती का जजमेंट भी हुआ. तो 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है. चलिए कोई बात नहीं. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड फैमिली एंड कॉमर्शियल लॉ इज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन. Yes. अगला आप बताइए अपने रूल ऑफ लॉ. व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ? Rule of law is a concept which originated in the British by A.V. Dicey. A.V. Dicey ने बनाया रूल ऑफ लॉ. A.V. Dicey के पहले he propounded, he used in his book, but it was formulated by I cannot recall his name, but he used in his book Principles of Laws against. Okay. So rule of law relates to everyone in a particular sphere where this the law applies, the law of the land applies. He will be treated equally. He will be treated equally, and it relates to the negative concept of rule of law, negative concept of equality, where it may happen that the one who is sorry, sir, if I could reframe it, if I am allowed to be reframe it, rule of law relates to everyone is equal before law and everyone will be treated equally in equal circumstances. Equality before law and equal protection of laws is the concept of the rule of law, according to you. आप यही कह रहे हैं? Equality before law and equal protection of laws is the concept of rule of law. Rule of law, in general terms, it means that everyone will be treated as per the law without any discrimination. Okay, चलिए. Judicial review, judicial activism and judicial overreach. तीनों को डिफरेंस करते हुए हमें एक एक केस लॉज बताइए जो जुडिशियल रिव्यू को कनेक्ट करता हो, जो जुडिशियल एक्टिविज्म को कनेक्ट करता हो और जो जुडिशियल ओवररीच को कनेक्ट करता हो. Judicial review relates to Article 13 of the Constitution in case of fundamental rights. Apart from it, Article 32 and 226 also relates to judicial review, where the judiciary of the country reacts to the laws passed by the legislature, whether it is whether it is as per the rule of law or not. So
if we take the example of Keswananda Bharti case, in that particular case, the law related to the state of land laws related to the state of Kerala. Okay, judicial activism. Judicial activism relates to the situation where the judiciary itself proactively takes the case where it is required in order to provide the complete justice. If we take the case of state of Rajasthan, Visakha versus state of Rajasthan, in that particular case, the court acted On judicial overreach. and provided the sexual harassment. Judicial overreach. Judicial overreach are the situations where the puts its shoes into the legislature of the country, and where it seems that it is not necessary for the court to intervene. We can take the situation like the recent situation like the regarding the legalization of same-sex marriage, where even after the full hearing, the court comes to a conclusion which the state was saying since its inception, that the matter should be sent to the legislature to be decided, but even then the court acted in that particular matter. चलिए, एक लास्ट सवाल आपसे. Yes. Pious obligation क्या है? Sir, I cannot recall it properly, but if I am allowed to say, I would say that it's the legal requirements that a particular office has to fulfill. No, okay. Thank you, sir. सचिन जी, मुझे बताइए, are there any essential qualifications to become the Chief Justice of India? The qualifications is the same as regarding to becoming a Supreme Court judge. So on what basis do we select the Chief Justice of India? It's a normal trend or a normal practice that the senior-most judge of the Supreme Court will be Chief Justice of India. It has not happened in the few situations like the case of Justice A.N. Ray, but the outgoing Chief Justice normally suggests the name for the Chief Justice of India to the President. And is the government of the present day bound to accept that name, or can they simply reject it? No, the government of the day is not bound to accept that particular name. The government can recommend to the President any other name. The government can recommend any other name to the President. So the Supreme Court will not be heard in the matter. Sir, if we go to the precedents, what has happened in India, Justice A.N. Ray was not, in the case of Justice A.N. Ray, the view of the government was taken in the account, but not the Supreme Court. Okay, tell me the difference between a Sapinda relationship and prohibited degrees of relationship. Sorry, sir, I could not recall it right now. Okay, no worries. Does the Hindu Marriage Act anywhere talk about intra-gotra marriage? Can you marry inside your own gotra? No, sir. It doesn't prohibit, but the scientific, normally the people refrain from doing intra-gotra marriage because of the customs in their particular tradition. Okay, so people generally do not marry within their own gotra. That is what you are saying. Okay, fine. Tell me, why are the directive principles of state policy not enforceable? Why don't we make them enforceable? Sir, the directive principle of state policy which are stated in part 4 are normally are not enforceable because of the reason that they are the they are the light or the path which are suggested for the government of that time to follow. And if we enforce it, then even there will be a list of cases in the court to decide in order to implement those policies. And these are those directive. These are those policies which is very difficult for a government of any particular time to implement in a time frame. Okay. What do you know about the Ramakrishna Mission and the Belur Mutt? I completed my early education from class 6 to 12 from Ramakrishna Mission Vidyapit,
Deoghar, Jharkhand. It is affiliated with Ramakrishna Mission Belur Math, which was established by Swami Vivekananda in 1897, and Ramakrishna Paramahansa was the spiritual guru of Swami Vivekananda. Okay, since my last question, since you have shown your interest in mediation as I was looking at your details, let us say the panel is in complete chaos and we do not agree with your selection. How will you mediate between us if there is a difference of opinion? What will be your strategy? First of all, I am sorry, I have written meditation, not mediation. Okay, but I will answer. I will try to answer it. If I am not wrong, I am sorry. In cases of mediation, I think this particular thing is not available in case of judiciary. The mediation opportunity for any particular candidate. But if it is available, if it is to be heard, then I think I would knock the doors of BPSC, who is the conducting authority in case of Bihar Judiciary for mediation. Thank you. Sachin, who was the first judge from Bihar to become CJI? Sorry, sir, I am not. Has anybody from Bihar become CJI ever? Anybody born in Bihar later became Chief Justice of India? Okay, never mind. Which I CJI? cannot recall it right now. And do we have some names from Bihar who became Chief Justices? I am trying to recall, but I could not. Okay, fine. Next question. Which CJI was having the longest term? The current CJI, Chandrachud, D.Y. Chandrachud has longest. How many years he has served as CJI? 2 years and 9 or 11 days. And do you think this is the longest? Sorry, sir. That's why The longest is 7 years almost. Oh, sorry, sir. I could not. You used to recall who that person was who served 7 years as CJI. Okay, who's the first CJI of? Justice 𝐦𝐥𝐿𝐢𝐚 was the. And he came from which state? Sorry, sir. I am not. Okay, never mind. Can you tell us the exact hierarchy of judicial officers in local courts in Bihar? The topmost, going from top to down, first the district or session judge. District or session judge? Districts and session And judge. session judge, okay. Secondly, family judge, and the list of there are many additional district and session judges. After that, the chief judicial magistrate, come assistant session judge. Thereafter, the additional chief judicial magistrate, the judicial magistrate first class, judicial magistrate second class. And who among them is called Munsif Magistrate? The judicial magistrate first class are in addition, they have the additional powers of Munsifs. And as Munsif Magistrate, what are their functions? They look after the civil cases as Munsif. Okay. And do we have any woman judge in Patna High Court? As far as I could remember, I cannot recall any name. Any name, okay. What is the sanction strength of Patna High Court? Yes, sir, 32. And what is the actual number of judges in Patna High Court today? 30. 30? Yes. Okay. And how many district courts we have in Bihar? 38 district courts. And how many police districts are there? 42. 42? And only 38 courts are there? Yes. So which are the 4 police districts not having any courts? One is the Bagha in West Champaran. Another is the Bar in Patna. But these 2 I can't recall. Okay, never mind. My last question. Who was the first Chief Justice of the Patna High Court? Justice Sir Edward Chamier was the first Chief Justice of Patna High Court, which was established in 1916. Which years he served as Chief Justice of Patna High Court? In 1916. 2? 2, sir, I cannot recall. Okay. Nice talking to you, Sachin. Your interview is over. You may go now. Thank you. May I come in? Come in. Have your seat. Thank you, sir. सचिन, क्या क्या लग रहा है कि 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन के दिन आपका इंटरव्यू है? First of all, lack of legal knowledge, sir, which I am facing because
I was in preparation of judicial search. Thereafter, I was down with a whole week or 15 days with cold cough and fever. So I could not focus on legal revision. That's I could. ठीक है, That it is coming in my mind, but the exact words, the limited words in which I could explain, that is not coming out. ठीक है। और तो खैर वो तो आपके पास 20 दिन का वक्त है, 15-17 दिन है, उसको रिवीजन करिएगा। आपने पहचान लिया होगा कहाँ कहाँ रिवीजन करने की जरूरत है। और तो जो कुछ लीगल नॉलेज और जनरल नॉलेज द रिगार्डिंग द चीफ जस्टिस एंड ऑल दिस थिंग। बिहार के बारे में, मतलब बिहार से आप इमोशनली कितने कनेक्टेड हैं, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ स्पेसिफिक नॉलेज टेस्ट किया जा सकता है, जरूर नहीं पूछेंगे। ठीक है, सचिन देखिए, ओवरऑल आपका कैंडिडेचर अच्छा है का मतलब कि लार्जली एक सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कई फ्रंट पे दिख रही है। तो पहले जो एकदम बाहरी तौर पे दिख रहा है वो ये कि थोड़ा सा मेंटल अलर्टनेस और बेहतर हो सकता है। जैसे आप आके एकदम से शक्ते में आ गए कि अब मैं क्या करूं, आगे आप खड़े हो गए, तो मैंने कहा कि चलो फिर ठीक है, गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए। ये वहाँ बोर्ड मेंबर को आप अपॉर्चुनिटी मत दीजिए। मतलब आप मेंटली अलर्ट रहिए, परमिशन लेके अंदर आइए, ग्रीट करिए, बैठने के बाद थैंक्स वगैरह कहिए, मतलब मेंटली अलर्ट रहिए, नवयुवा आदमी है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ड्रेस अपीयरेंस में आपका डार्क ब्लू सूट है। नहीं, ये सूट अच्छा लग रहा है, टाई अच्छा लग रहा है, शर्ट वगैरह भी ठीक है, कोट का शायद टॉप बटन आपका खुला पड़ा है जी, तो इसलिए थोड़ा सा awkward लग रहा है। अगर दूसरा एक्चुअली दिस इज माय कॉलेज शर्ट। हाँ, तो दूसरा शर्ट जो कंफर्टेबली बंद हो जाए ऐसा शर्ट यूज करिएगा। Can I take a suggestion, sir? I have two options to either to take a white shirt or the blue shirt, which are light blue shirt, which you are wearing, sir. हाँ ठीक है, लाइट ब्लू पहनिए, टाई लेकिन फिर उसमें शायद चेंज करना जी पड़ेगा। जी। है टाई दूसरा? I have the same, sir. Luckily, I have the same attire that you are wearing, sir. अच्छा, तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी जेस्चर आपका प्लेजेंट है, बैठने का पोस्चर ठीक है, थोड़ा सा और पीछे से रखिएगा, थोड़ा सा लग रहा है आगे झुके हुए हैं। 15-20 मिनट का फेयर है, वैसे हम लोग इतना टाइट तो बैठने के आदी होते नहीं, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक रहे तो अच्छा है। ये आपका एक्सटीरियर वाला पार्ट हो गया। और आई कांटेक्ट भी थोड़ा सा स्टेबल करने की ज़रूरत है। बातचीत करते समय आप कई बार इधर उधर देख रहे थे, बहुत सिंपल चीज़ है, बातचीत करते समय उसी को देखिए जिससे बात हो रही है, ताकि उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर लगा हो। बात आप मान लीजिए मेरे से बात कर रहे हैं और तब तक देखिएगा उधर, ये सोचते हुए कि उनका अटेंशन भी ग्रैब कर लूँ। तो जो मेन जिसका अटेंशन ग्रैब करना है, वो जो निश्चित है, उस निश्चित को छोड़कर निश्चित की ओर जा रहे हैं, वो मुहावरा वही लागू होगा कि अनिश्चित का पता नहीं, निश्चित भी जाएगा। तो उसमें क्या करना चाहिए? जिन्होंने जनरली आप पूछा उस चीज़ को देखिए, लुक एट द पर्सन यू आर टॉकिंग टू, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 90%। But if the sentence is a long sentence or the entire conversation is long, 3-4 sentences are there, after completing one sentence, if you feel that other members may feel a little ignored, glance at them in fraction of a second. That should be done in very quick manner. So that before when you start the new sentence, you are again looking at the same person जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं। उनका ध्यान टूटना नहीं चाहिए, जो आपके मेन लिसनर हैं, और साइड लिसनर के चक्कर में मेन लिसनर को डिस्टर्ब नहीं कर। बात समझ गए? यस यस। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यही है कि देखिए, लेकिन अपने बेसिक जो अटेंडी हैं उसको डिस्टर्ब करके मत देखिए। ओके, हैंड प्लेसमेंट वगैरह ठीक है, नेक मूवमेंट वगैरह स्टेबल है, और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है। उसको फिर वो मेंटल अलर्टनेस सही होगा। जब आप सवाल सुन रहे होते हैं उसी वक्त सोचना शुरू कर दीजिए कि इस सवाल का ऑब्जेक्टिव आंसर, प्रिसाइज आंसर, टू द पॉइंट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, वेग या बहुत लूज सेंटेंस फॉर्मेशन मत करिए, एकदम ऑब्जेक्टिविटी लाइए। 2-3 पॉइंट में अगर बता सकें तो और अच्छा है। इलाबोरेशन की जरूरत होगी तो आपसे पूछेंगे फिर कि फॉर इलाबोरेट इट, एक्सप्लेन इट, इलस्ट्रेटेड, जो भी करना है उनको। आप अपनी तरफ से क्रिस्प आंसर पहले बनाइए। जब छोटा आंसर होगा तो आप डिलीवर कर लेंगे विदाउट इंटरप्शन। अभी क्या हो रहा है कि आप सेंटेंस आधा बना के डिलीवर कर रहे हैं, फिर आधा सोच रहे हैं,
उस बीच में इंटरप्शन आ रहा है, बीच बीच में टाइम गैप आ जा रहा है। तो छोटे छोटे आंसर बनाइए, प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा घर पे, दोस्तों को कहिए कि मेरे से सवाल पूछो, आप रिहर्सल करिए कि छोटे आंसर बनाइए, डिलीवर करिए 1 सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में जाए मैक्सिमम, इंटरप्शंस कम हो तो मोमेंटम या स्पीड ऑफ डिलीवरी अच्छी हो जाएगी, तो इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा उसका। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्वालिफिकेशन अच्छा है, पटियाला से पढ़े हैं तो पंजाब के बारे में हो सकता है 1-2 सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, बिहार में इलेक्शन है नेक्स्ट ईयर, लैंड सर्वे चल रहा है, थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, उससे पूछ सकते हैं। शेड्यूल 9 के बारे में, चूँकि लैंड रिलेटेड लॉज वहाँ रिजर्व किए जाते हैं, पूछ सकते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि शेड्यूल 9 वाज क्रिएटेड फर्स्ट इन विच ईयर, मतलब जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था 1951, तो उसमें शेड्यूल 9 था कि नहीं था? नहीं था। तो शेड्यूल 9 क्रिएट ही हुआ पहली बार 51 में, और किसके रिक्वेस्ट पे क्रिएट किया गया? क्या उसका बिहार से कोई कनेक्शन है? श्री कृष्ण से। तो बिहार गवर्नमेंट, श्री कृष्ण नहीं, बिहार गवर्नमेंट ने क्रिएट किया कि भाई हम लैंड रिफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर करिए। तो इट वाज बिहार ऑन द इनिशिएटिव विच दैट शेड्यूल वाज फर्स्ट क्रिएटेड। वो सब पूछ सकते हैं आपसे, चूँकि लैंड सर्वे से रिलेटेड मसला है तो थोड़ा सा वो सब देख लीजिएगा। ठीक है, तो 20-25 दिन का ऐसे इस्तेमाल करिए। एक दो मेंबर को ऐसा लगा कि जितनी पोलाइटनेस हो सकती थी उतनी नहीं थी, वो मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा लगा। कई जगह ऐसा लगा कि आप आंसर देने में स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसे मौके पर व्हेन यू आर नॉट हैविंग अ क्लियर कट आंसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, you should promptly accede it, accept it, and show your commitment to develop that knowledge. कहिए कि सर sorry, at the moment I'm not able to articulate my answer, I'll read it. ऐसा 2-3 बार अगर कहना पड़ जाए तो कहिए। सॉरी कहने से ये साबित होता है ना कि आप पोलाइट आदमी हैं, ईगो नहीं रखते हैं। ये पब्लिक सर्विस, जब आप पब्लिक पोस्ट पे जाएंगे तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। नहीं, ये तो मान लीजिए कोई जजमेंट आप, मतलब जो बैलेंस जजमेंट होना चाहिए वो बना नहीं पा रहे हैं, जल्दीबाजी में आपने लिख दिया, उसमें फिर लिटिगेशन और बन सकता है। तो पोलाइटनेस इससे प्रूव होगा कि आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ सॉरी कहते हैं, उससे आपकी ईमानदारी भी साबित हो जाती है कि भाई आप नहीं जानते हैं तो आपको ये भी पता है कि मैं क्या चीज़ जानता हूँ क्या नहीं जानता हूँ। तो ये सब कहीं कहीं पंक्चुएशन है, एक तरह का कम्युनिकेशन स्किल का, उसको यूज़ कर लीजिए। बाकी सब चीज़ें एकदम बढ़िया है। और कोई, मतलब इसके अलावा और कोई सजेशन नहीं है हमारी तरफ से। आपको कुछ सवाल अगर पूछना हो, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट और एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर वो अगर कुछ कई बार ऐसा होता है कि द वेरी लेम क्वेश्चन आई कुड नॉट रिकॉल जस्ट लाइक रूल ऑफ लॉ, तो उस सिचुएशंस में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जो आ रहा है वो बता के निकल जाओ, क्या सॉरी बोल दो। हालांकि अभी आपके पास 25 दिन है तो आप कर सकते हैं। आप क्या करिए ना, मेन पेपर वाइज 20-20, 25-25 टर्म का एक ग्लॉसरी तैयार करिए कि एक लेमैन से या किसी से कोई क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में पूछ सकता है, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, जो भी चीज़ें 20-25 आपको ज़्यादा अच्छा पता है। कॉन्ट्रैक्ट से कोई क्या पूछ सकता है, 20-25 क्वेश्चन छोटे छोटे 1 लाइनर क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चनर डेवलप करके उसके आंसर, प्रिसाइज आंसर भी रेडी कर लीजिए। ये आप 25 दिन में कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं जो आपने तैयार नहीं किया, एंटिसिपेट नहीं किया, और आपके पास रेडी आंसर नहीं है। तो आपको एम्बैरेस्ड फील नहीं करना है, आपको ऑफ कोर्स अपोलोजाइज करना है, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू आर्टिकुलेट दिस आंसर, आई विल ऑफ कोर्स गो एंड रीड अबाउट इट, लेकिन ज़्यादा समय नहीं गंवाना उसके ऊपर। ठीक है, और कुछ तो सर बाकी मेंटल अलर्टनेस रखिए, एनर्जेटिक रहिए, आराम से दीजिए एग्जाम, बढ़िया करिएगा। यस, आई वुड नॉट गिव इट 100% ड्यू टू माय कोई बात, कोल्ड कफ एंड फीवर। कोई बात। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।